ये कुछ कुछ ICAI के फेवरेट क्वेश्चंस हैं विच आर frequently tested and also are part of your RTPs, so ध्यान देना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? From today we'll be starting the revision series of financial reporting. We will be covering all the IndASs, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। Let's start with IndAS 16, property, plant and equipment. Now, this IndAS usually comes in exam for an average weightage of about 8 to 12 marks. Okay, it is usually highly tested in a combination with IndAS 23, borrowing cost, IndAS 36, which is impairment, and IndAS 37, provisions. Now, what is the objective and scope? So, हमने जैसे देखा था, जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं हम उसकी तीन चीजें देखते हैं, what, why and how, right? अब इसमें भी what is IndAS 16, बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आता है। why? Now, similar to all the IndASs, this is basically to align the financial reporting across all the companies. Okay, now how is something which we will see here. Objective and scope we saw. Now, scope exclusion, this IndAS is applicable to all the PPEs, right? There are some scope exclusions such as अगर कोई held for sale है तो it will be applicable, the IndAS 105 will be applicable. अगर कोई biological assets है, right, तो IndAS 41 उस पर अप्लाई करेगा, except there is bearer plans which are covered under IndAS 16, हम आगे देखेंगे। Exploration and evaluation of assets as per IndAS 106 and mineral rights, that is fine. Avi, what is the definition of PPE? Now, IndAS 16 says that PPE are tangible items, right? Tangible items, intangible नहीं है, okay? क्योंकि वो फिर IndAS 38 में चले जाता है। Tangible items that are three things: held for use in production or supply of goods or services. अगर आप किसी को goods और services प्रोड्यूस करके सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें, फॉर रेंटल टू अदर्स, अगर आप किसी को रेंट कर रहे हैं उस पर, और फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, कोई भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन वन पीरियड। यूजुअली वन पीरियड हम 1 ईयर मान के चलते हैं, बट अगर इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन पीरियड, एंड अगर ये तीन में से कोई भी एक कंडीशन के लिए, तो दैट विल क्लासिफाई एज अ प्रॉपर्टी, प्लांट और राइट। अभी बेरर प्लान्स जो हमने ऊपर देखा था, व्हाट इज अ बेरर प्लांट? बेरर प्लांट को मैं ये भी कहता हूँ, इट इज अ फार्मर्स मशीनरी। सो बेरर प्लांट इज नथिंग बट अ लिविंग प्लांट जिससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एप्पल ट्री। एप्पल ट्री इज अ बेरर प्लांट जिससे एप्पल्स कीप ग्रोइंग ऑन ट्री एवरी ईयर। नाउ it is used for production or supply of agricultural produce, apples. It is expected to bear output for more than one period and has a remote likelihood of being sold. Okay, अगर कोई if now apple tree is a bearer plant, but जो apples उस पे grow कर रहे हैं, that is an agricultural produce to be dealt as per IndAS 41, biological assets. Okay, coming to the recognition criteria. नाउ व्हाट इज मेंट बाय रिकॉग्निशन? किसी भी चीज को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाते हो तो उसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन। नाउ हाउ डू यू रिकॉग्नाइज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट? टू थिंग्स। फर्स्ट इज फैब, वो वाला फैब नहीं, दिस इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इट इज प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी, कि आपको आगे जाके इससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा। एंड द कॉस्ट ऑफ आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली, आप उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हो। स्टेप 1 गेटवे है। ये स्टेप अगर फुलफिल नहीं हुई तो आप पीपी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, सीधा आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना पड़ेगा आपको। नाउ सम स्पेसिफिक आइटम्स रिकॉग्निशन, आइटम्स सच एज स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट। अगर कोई स्पेयर पार्ट्स है, लाइक लेट्स से कोई वायर्स वगैरह है, या फिर कोई स्टैंड बाय इक्विपमेंट है जो अभी यूज नहीं हो रहा है बट यू विल यूज इन द फ्यूचर, और कोई सर्विसिंग इक्विपमेंट है, so you have to check whether they meet the definition of PPE, whether they will be held for more than one period. अगर if they are held for more than one period, then you will have to recognize them as PPE. अगर नहीं तो you'll have to classify them as inventory. Okay, अगर if there are any items for environment or safety concerns, let's say आपने कोई चिमनी इंस्टॉल की है अपनी फैक्ट्री में for safety purposes, अब that will not
give any future economic benefits to you, right? But it will help other assets to obtain the future economic benefits, right? They are necessary for the entity to obtain future economic benefits from other assets, तो हम उसे भी PPE recognize करेंगे. Now, unit of measurement, right? This usually IndAS 16 does not prescribe कि आपको कैसे measure करना है. It is appropriate generally, even practically, to aggregate individually insignificant items. जैसे अगर कोई nuts bolts हैं, कोई tools है, molds dies हैं, तो आप उनको aggregate value आप उनको एक करके as a one item दिखा सकते हो as a PPE. Another thing, usually अगर individual assets are below the materiality level determined by the management, then you can also depreciate the entire asset in 1 year. So usually ये practically भी होता है that if the asset is of very insignificant value, then आप उसे उसी साल में पूरा depreciate करके you just write off the whole asset. Now, initial recognition of PPE. हमेशा हमेशा a PPE should be recognized always at cost, right? आपका जो भी cost है उस पर recognize होना चाहिए. सर cost क्या है? Now cost, to determine the cost, we have the PDD formula, which is purchase price plus directly attributable cost plus कोई भी dismantling और removal costs है. Okay? First thing, purchase price. Now purchase price में क्या क्या include होता है? आपकी जो cost लगी है, basically your purchase price plus any import duties plus non refundable purchase taxes. अगर कोई refundable taxes है, let's say GST और VAT, उन्हें हम exclude करेंगे if the input tax credit is available. Okay, minus any trade discounts. Remember, trade discounts only. अगर कोई cash discounts है, so that will not be reduced from the cost of the PPE. Only if there is any trade discount, that will be reduced from the purchase price. ठीक है. सो ये हो गया पहला परचेज प्राइस. सेकंड, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट. नाउ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या क्या आता है? फर्स्ट है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, cost of site preparation, initial delivery, handling, all of the costs which are directly attributable to bringing the asset to the location and condition intended by the management. ठीक है. सो उस asset को आप वो लोकेशन और कंडीशन पे लाने के लिए क्या क्या कॉस्ट इनकर करोगे, उसे कहते हैं सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग फंक्शनैलिटी. इसके लिए हमने एक चॉकलेट फैक्ट्री का एग्जांपल लिया था, इफ यू रिमेंबर, राइट? तो अगर कोई कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग है और उस टेस्टिंग से हमें अगर सैंपल यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड उसको बेच के हमें कोई प्रोसीड्स आ रहे हैं, तो उन्हें हम कॉस्ट से रिड्यूस करेंगे. ठीक है, लेट्स जस्ट सी द एग्जांपल वंस. हाँ, सो दिस वाज आवर एग्जांपल ऑफ चॉकलेट फैक्ट्री. सो हमने ये देखा था कि ये कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग के लिए हमें रॉ मटेरियल्स लगेगा विच इज नथिंग बट कोको एंड शुगर ऑफ 50,000. टेक्नीशियन फीस लगेगी 30,000, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी 20,000 की. टोटल कॉस्ट हमारी आती है 1 लाख. अब ये रॉ मटेरियल्स टेस्टिंग के बाद व्हाट वी डिड, वी सोल्ड देम टू अ बेकरी, राइट? अगर सो we sold them to a bakery for about 20,000 rupees. तो ये जितना भी proceeds हमें मिला है by selling these sample units to bakery, this we will be reducing from our cost. So from the 1 lakh we will be reducing the 20,000. Our cost will be 80,000. This was our scenario 1. अभी scenario 2, we sold it to a bakery for 80,000. So जितना हमें raw material का cost लगा था उससे हमने ज़्यादा में बेचा है, but not more than the cost of the asset. Even in that case, this entire 80,000 will be reduced from the cost of 1 lakh, leaving your carrying amount of the asset to 20,000. Now third situation, अगर आपने बेकरी को बेचा है 1,10,000 में, more than the cost you have incurred for the entire asset. Now in that case, you will not recognize the asset because all of the proceeds, right, 1 lakh you will be reducing from the cost. आपकी cost हो जाएगी 0 and जो भी additional है, जो भी 10,000 आपका profit है, वो जाएगा P&L में.
राइट, क्लियर, ओके। ये हमने देखा, excess of net sale proceeds if any shall not be recognized in profit or loss but deducted from the directly attributable cost. So this is a major carve out compared to IA 16, and this is frequently tested in the exams. So the third thing was dismantling and restoration. We will see this also further. Okay, any initial estimate of dismantling, removing or site restoration cost का जो भी estimate लगता है to dismantle the site after after the term completion will also be included as part of the cost, but at the present value using the pre-tax discount rate. Okay, this pre-tax is important because this is also tested in exams. So you'll have to use it using a pre-tax discount rate at the present value. Okay, now coming to what all is included versus excluded in directly attributable costs. Employee benefit costs, site clearing, freight, testing costs, any borrowing costs as per IndAS 23 is included. Now अगर कोई बिजनेस आप न्यू लोकेशन में कर रहे हो, उसका कॉस्ट इनकर हो रहा है, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड. कोई एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का कॉस्ट इंक्लूड हो रहा है, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड. अगर कोई न्यू फैसिलिटी ओपनिंग, अगर अपने इनॉग्रेशन के लिए किसी को बुलाया है, that will not be included. Any administrative and general overheads will not be included, and any relocating costs or reorganizing staff operations will not be included. कोई भी आपके initial operating losses हैं before you start the production will not be included in the cost. Any abnormal amounts of wasted material, and we discussed this before, any cash discounts will not be part of the cost. ठीक है. अभी बहुत बार इंसिडेंटल ऑपरेशंस होते हैं. सपोज आपने कोई साइट खरीदी एंड अंटिल द वर्क इज स्टार्टिंग यू गेव दैट साइट एज अ कार पार्क, एंड उससे आपको थोड़ी इनकम हुई. नाउ दैट इनकम यू कैन नॉट रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट. तो अगर कोई भी इंसिडेंटल ऑपरेशंस हैं टू दैट आर नॉट नेसेसरी, these are not necessary to bring the asset to the intended location or condition, so that is recognized in P&L, that is not deducted from the cost of the asset. Okay. नेक्स्ट सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइज करना कब बंद करेंगे हम? सो कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट सीजेस व्हेन द आइटम ऑलरेडी इज इन द लोकेशन और कंडीशन. आप लोकेशन और कंडीशन पे लेके आ गए, अब आपको कैपिटलाइज करना बंद करना पड़ेगा. ओके, कोई भी कॉस्ट उसके बाद जो इनकर होती है वो आप एक्सपेंस करोगे. ओके, सो पेमेंट डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स. अगर आप कोई एसेट को ऐसा अक्वायर करते हैं वेयर यू आर सपोज टू पे after 1 year or after 2 years, you have to discount, you have to do a present value of that asset, and that will be your initial asset cost. इसके लिए भी हमने एक एग्जांपल देखा था. लेट्स जस्ट सी दैट नाउ. यस, फॉर द सेम चॉकलेट फैक्ट्री आपने एक मशीन परचेज की है 1 लाख की. नाउ यू आर सेइंग दैट दैट इज पेबल आफ्टर 1 year. आप 1 साल बाद उसका पेमेंट करेंगे. तो आपकी जो कैश प्राइस इक्विवेलेंट, सो टुडेज डेट व्हाट इज द कैश प्राइस इक्विवेलेंट अज्यूमिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%, आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी विच इज 90,909, उस पे आप पीपीई को रिकॉर्ड करेंगे. सो व्हाट विल बी द एंट्री? पीपीई टू अकाउंट्स पेएबल, एंड ईयर 1 पे you will recognize the interest cost, interest expense to account payable, and accounts payable to बैंक आप 1 लाख का पेमेंट कर देंगे. क्लियर? ओके, ठीक. नेक्स्ट, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट. अभी ये जो पहले हमने सब देखा था दैट वाज if you purchase any asset, right? The next is self-constructed asset. So it says the cost of self-constructed asset is determined using the exact same principle as for an acquired asset. जैसा आप acquired asset को करते हैं, same principle you will use to measure or to recognize the cost of the self-constructed assets. अभी कुछ key adjustments हैं. For example, internal profits. अगर कोई entity similar assets बना रही है in the normal course of business, so those internal profits are eliminated. इसके लिए भी हमने एक एग्जांपल देखा था of furniture manufacturing, right? Yes, self constructed asset. Now अगर कोई furniture manufacturer है, वो क्या करता है? It uses wood from its own factory for warehouse. So they are manufacturing furniture and they are manufacturing the furniture for their office also. So usually उस फर्नीचर की कॉस्ट है 10 lakhs, बट वो उसको 12 लाख में बेचते हैं इन द मार्केट. द कॉस्ट which will be considered for PPE will be 10 lakhs and not 12 lakhs.
ओके। कोई abnormal wastage है, now while constructing the asset you incurred abnormal wastage, that will not be included as part of the asset, ठीक है। अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है इन कर रहे हो तो उसका इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करोगे अंडर IndAS 23, ओके। नाउ एक्सचेंज ऑफ असेट्स, अगर आप कोई असेट एज एन एक्सचेंज अक्वायर कर रहे हो, इफ पीपी इज अक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर अ नॉन मॉनिटरी एसेट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी एसेट्स, द कॉस्ट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, ओके। इसमें आपको मेन चीज देखनी पड़ेगी वेदर द एक्सचेंज लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस और नो। इफ एक्सचेंज लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, अब लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस का क्या मतलब है, अगर आप कोई सिमिलर एसेट्स एक्सचेंज कर रहे हो, ओके, यू आर एक्सचेंजिंग अ कार फॉर अ कार, जस्ट देयर इज अ कलर डिफरेंस ऑफ सेम मॉडल सेम वैल्यू, देन द एक्सचेंज लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ओके। तो उस केस में यू विल रिकॉर्ड द एसेट एट कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। तो आप जो भी एसेट गिव अप कर रहे हो उसके कैरिंग अमाउंट पे ही एसेट को रिकॉर्ड करो। Now, if the exchange has commercial substance and fair value also is measurable, then you will measure the asset at fair value of the asset given up. अब इसके तीन प्रेफरेंसेस हैं, राइट। अगर the transaction doesn't lack commercial substance, so first preference is fair value of asset given up plus cash paid। अगर कोई भी asset आप give up कर रहे हो उसका fair value plus cash paid। The second preference is fair value of asset received। अगर आपके पास fair value of asset given up नहीं है तो फिर आप फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव पे जाओगे। एंड अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो फिर आप कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी यू विल बी रिकॉर्डिंग द एसेट। इसके लिए भी हमने एक इलस्ट्रेशन देखा था, इफ द एंटिटी इज एक्सचेंजिंग लैंड फॉर अ प्राइवेट जेट। तो एंटिटी क्या कर रही है, लैंड जिसकी कैरिंग अमाउंट 10 मिलियन है एंड फेयर वैल्यू 15 मिलियन है, plus it's giving cash of 3 million for a private jet of fair value 20 million. So what was the fair value of asset given up? The fair value of asset given up was 15 million plus cash paid is 3 million. तो 18 million पे you will record the private jet, ठीक है। Now coming to the next measurement after recognition। recognition के बाद कैसे measure करें, इसके दो मॉडल हैं, वन इज आइदर कॉस्ट मॉडल और सेकंड इज रिवैल्यूएशन मॉडल। सो कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, you will record the asset only at cost and revaluation model में you have to revalue the asset every year। अब इसके लिए also we saw an example, right। सो कॉस्ट मॉडल पे हम क्या करेंगे, अगर कोई पीपीई है 10 lakhs, we acquired the asset for 10 lakhs, so depreciation, so first year depreciation 1 lakh, year 1 9 lakh, so same cost पे आप कैरी करोगे। year 2 अगेन 9 लाख माइनस 1 लाख, ओके। सो ईयर 2 में 9 लाख माइनस 1 लाख 8 लाख हो जाएगा, ईयर 3 में 8 लाख माइनस 1 लाख 7 लाख हो जाएगा, राइट। सो दैट इज हाउ योर कॉस्ट मॉडल विल वर्क। कमिंग टू रिवैल्यूएशन मॉडल, नाउ द कॉस्ट ऑफ पीपीई इज 10 lakhs। अगर आपने 10 साल के लिए उसे एक्वायर किया है, depreciation for the first year you say it's 1 lakh, so year 1 your carrying amount becomes 9 lakh। Now in the year 1 what you do is you revalue the asset and you say that the fair value is 11 lakhs। तो आप क्या करोगे, ये जो 2 lakhs का गेन है जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, you will pass an entry asset to revaluation gain। Now mind this, revaluation surplus will always first time will always go to OCI। अगर ये रिवैल्यूएशन डेफिसिट होता, अगर इसमें लॉस आता, अगर आपकी सपोज फेयर वैल्यू इसमें 7 lakhs होती, तो ये जो -2 lakhs का लॉस है ये आपको P&L पे लेना पड़ता है, ओके, क्लियर। नाउ वन मोर थिंग, जो डेप्रिसिएशन आपका रहेगा year 2 पे you will have a prospective adjustment for the depreciation। So 9 years you will have suppose 11 lakhs as the fair value। तो आप जो depreciation लगाओगे you will not change any previous depreciations, only the depreciation from year 2 will be updated। Now let's see some aspects of revaluation model। So revaluation model कैसे काम करता है,
you will have fair value at the revaluation date less any subsequent accumulated depreciation. So हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने revaluation date पे इसका fair value निकाला and any subsequent depreciation you will reduce, है ना, and उसके बाद you will arrive at the carrying amount. Okay, frequency क्या होनी चाहिए? So standard says there should be sufficient regularity, but usually अगर आपके एसेट के वैल्यू में सिग्निफिकेंट चेंजेस है, वॉलेटाइल है, तो आप उसको एनुअली रिवैल्यू करोगे. अगर significant changes नहीं है, there are insignificant changes, then you will revalue it once in 3 to 5 years. Okay, now first time upward revaluation जो हमने अभी देखा था, अगर कोई एसेट का upward revaluation होता है for the first time, you will take the credit to OCI. Okay, and you'll have to accumulate it as revaluation surplus. अगर डाउनवर्ड होता है तो the loss will be charged to profit and loss. ठीक है. Now अगर अपवर्ड आफ्टर प्रायर डाउनवर्ड आपने पहले डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर लिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आपने लॉस को चार्ज कर लिया और उसके बाद आपका अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, इट मींस यू विल टेक आउट दैट लॉस जो आपने पहले पीएनएल में डाला था. द गेन यू विल हैव टू क्रेडिट टू द पीएनएल टू द एक्सटेंट ऑफ प्रायर लॉस. आपने जितना प्रायर लॉस रिवैल्यूएशन का पीएनएल में डाला था उतने तक आप गेन भी पीएनएल में डालोगे एंड एनी एक्सेस गेन यू विल हैव टू टेक इट टू ओसीआई. सो द थंब रूल विल रिमेन द सेम. आपका जो गेन है वो ओसीआई में जाएगा एंड जो लॉस है वो पीएनएल में जाएगा. पर आपका अगर पहले कोई लॉस हुआ है और अब गेन हो रहा है, सो इन आवर एग्जांपल इफ वी से या सो हम हमारे एग्जांपल में पहले लेट्स टेक दिस एग्जांपल वेयर फेयर वैल्यू 7 lakhs हो गई थी and I had a loss of 2 lakhs. अब थर्ड ईयर में I am saying that the fair value of the asset has increased to 10 lakhs. Okay, थर्ड ईयर में I am saying that the fair value of asset has increased to 10 lakhs. Okay, in this case जो 2 lakhs आपने P&L में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया था, so that 2 lakh gain you will have to take it to P&L again and जो remaining 1 lakh gain है that you'll have to take it to OCI. ठीक है. Similarly for any downward revaluation prior to after prior upward, अगर पहले आपने upward revaluation कर लिया है पर अब downward revaluation कर रहे हो तो any loss will be debited to OCI first and then you will take it to P&L. Clear? ठीक है. अब revaluation के दो methods हैं. Let's see this. So there are two approaches in revaluation suggested by the standard. First is elimination approach. ठीक है. अब and then the second is restatement approach. We'll see one by one. Elimination approach में क्या होता है, आप asset का जो depreciation है उसको gross book value से eliminate कर देते हो. For example आपका asset है 100 lakhs का, gross book value 100 lakhs, आपकी accumulated depreciation है 40 lakhs year 2 में और fair value आ गई asset की 75 lakhs. Okay. Now what you will do is you will take out this accumulated depreciation against this gross book value. So what we do, accumulated depreciation to PPE 40 lakhs आपका accumulated depreciation हो जाएगा 0. Then आपका PPE का gross book value कितना हो गया 60 lakhs. Now 60 lakhs we will increase to 75 lakhs. How? We will just take PPE 15 lakhs to revaluation gain 15 lakhs. ठीक है. Now this was the first approach. अब second approach is a bit tricky. इसमें we have to calculate multiplier. अगर we say that नहीं, we have to also keep the accumulated depreciation balance and revalue the asset, then this approach is to be followed. इस approach में हम क्या करते हैं, we have to take the percentage multiplier which is fair value divided by the carrying amount. हमारे asset की क्या थी, fair value थी 75, carrying amount थी 60. So my multiplier becomes 1.25. It means there is a 25% increase in the fair value. What I will do, my gross book value I will multiply by the multiplier. My accumulated depreciation also I will multiply with the multiplier. ठीक है. My gross book value comes to 125 lakhs. My accumulated depreciation comes to
50 lakhs. What entry will I pass? I'll pass PPE debit 25 to cumulative depreciation, जितना इंक्रीज हुआ मेरा 50 lakhs minus 40 10, एंड जो भी डिफरेंशियल है वो मेरा रिवैल्यूएशन गेन आ जाएगा. अब दोनों में नेट इम्पैक्ट आपका सेम रहेगा, बट जस्ट द प्रोसेस इज डिफरेंट. ठीक है. अब अगर कोई सरप्लस और डेफिशिएट आता है रिवैल्यूएशन में, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करता है ये हमने देखा. अपवर्ड रिवैल्यूएशन अगर करते हैं तो अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में लेके जाएंगे, एंड वी हैव टू अक्यूमुलेट अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस. अगर कोई डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं तो हम प्रॉफिट और लॉस में लेके जाएंगे. सब्सिक्वेंट होता है, तो अगर पहले डिक्रीज हुआ उसके बाद इंक्रीज हुआ, मतलब वी हैव टू फर्स्ट टेक द इंक्रीज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस. अगर इफ इट वुड हैव बीन अ प्रीवियस डिक्रीज, देन they would have taken it to P&L. So that P&L we have to now set off against the increase, and any excess of the increase you'll have to take to OCI. Okay, similarly with the decrease, अगर कोई previous increase है तो आप OCI में लेके गए होंगे. अब decrease हो रहा है, इसका मतलब now the decrease shall be recognized in OCI to the extent it was recorded before, and जो भी excess decrease है that will be gone to P&L. अब रिवैल्यूएशन सरप्लस का यूटिलाइजेशन कैसे और कब होता है? सो revaluation surplus may be transferred directly to retained earnings. So this is the choice of the company. If the company wants the revaluation surplus को, they can transfer directly to retained earnings within the SOCI itself. आपको इसमें P&L का यूज नहीं करना है, आपको P&L के थ्रू ये ट्रांसफर नहीं करना है. So you have to transfer the revaluation surplus if needed directly from retained earnings, directly from revaluation surplus to retained earnings. कब होता है? दिस कैन बी इन टू केसेस. नाउ फर्स्ट इज अपॉन डी रिकॉग्निशन. अगर कोई एसेट आप डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस जो भी है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से लेके रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करोगे. ओके, दिस इज अ मैंडेटरी थिंग, यू हैव टू डू दिस. नाउ देयर आर सम केसेस वेयर optionally also you can move the revaluation surplus to retained earnings, right? Now we'll see this with our example itself. तो हमारे एग्जाम्पल में पहले हमारा डेप्रिसिएशन था 1 लाख, एंड आफ्टर रिवैल्यूएशन हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1.22 lakhs. So what standard says, ये जो डिफरेंस है 1.22 lakhs minus 1 lakh, so 0.22 lakhs, this difference you can reclassify from revaluation surplus to retained earnings. Okay. As we saw, revaluation surplus to retained earnings are not made through profit or loss. Never you have to use profit or loss to do transfer from revaluation surplus to retained earnings. Okay. Now next is component accounting. It's also important. In day 16, what it says is that you have to do component accounting for each item of PPE. So you agar if an item of PPE is significant, right? If the component of an item of an asset is significant in relation to the total cost, then you have to also record that component separately. इसके लिए हमने प्राइवेट जेट का एग्जांपल देखा था, एरोप्लेन का. मेथड्स, यस, एयरप्लेन का एग्जांपल देखा था. सो वी हैड एयरप्लेन ऑफ 100 CR. अब इसका इंजन वी आर सेइंग is costing 40 and the body is 60 CR, right? So you will have to do component accounting. You have to recognize this separately and this separately. So this is my individual written down values. Ab we'll see the replacement next. Okay, replacement account mechanics. अगर कोई कंपोनेंट आप रिप्लेस करते हो या मेजर इंस्पेक्शन करते हो, सपोज इन केस ऑफ एयरप्लेन यू replace the engine in the second year for 50 CR. So your WDV of the total plane is 90 crores, right? आपकी ओल्ड इंजन की कॉस्ट आप क्या करोगे? आप उस 90 crores से रिड्यूस कर दोगे.
तो जो 36 CR थी आपकी ओल्ड इंजन की कॉस्ट, वो आप रिड्यूस करके जो नया इंजन आपने परचेज किया है 50 CR का, यू विल ऐड दैट, योर टोटल WDV कम्स टू 104, आपके इंजन की कॉस्ट हो गई 50, और जो बॉडी की WDV थी 54 CR, that remains as it is. Okay, same. Coming next to subsequent expenditure. So अगर कोई डे टू डे सर्विसिंग है PPE की, repairs and maintenance है, so that you'll have to take to P&L. Replacement of parts, अगर कोई पार्ट्स का रिप्लेसमेंट है तो यू हैव टू कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट्स. अगर कोई कैरिंग अमाउंट है रिप्लेस पार्ट का previously, like let's say the engine which we saw, so the previous engine we de-recognize and we capitalize the new engine. ओके, अगर कोई मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉल हो रहा है, सो बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि फॉर एयरक्राफ्ट यू हैव टू रेगुलरली ओवरहॉल और इंस्पेक्ट, यू हैव टू डू इंस्पेक्शंस, राइट? तो इन दैट केस यू विल हैव टू कैपिटलाइज द इंस्पेक्शन कॉस्ट, एंड अगर कोई प्रीवियस इंस्पेक्शन कॉस्ट है तो आप उसको डी-रिकॉग्नाइज करोगे. सिमिलरली अगर आपको लगता है कि this inspection, the life of the plane is 10 years, but the inspection cost you have to do every 5 years, तो you have to recognize this separately कि आप inspection cost को separately 5 years में depreciate करोगे, and the rest of the plane you'll have to separately depreciate for 10 years. Okay, next is depreciation. Now what is depreciation? For the term you use the asset systematically, you will be taking out the cost and आप उसको expense record करते रहोगे. उसी को इन्होंने अंग्रेजी में कह दिया है systematic allocation of depreciable amount over its useful life. ठीक है. Now when does the depreciation commence? Depreciation commence when the asset is available for use. इसमें हमने एक example देखा था. If you purchase the asset in April and the asset is still in construction mode and you are able to use the asset from June, so this is the time you will start depreciating the asset and not April. Okay, so you'll have to begin the depreciation when the asset is available for use. Available for use क्या होता है? When the asset is in the location and or condition as intended by the management. Now when the depreciation ceases, when you de-recognize the asset, जब आप स्क्रैप कर देते हो या सेल कर देते हो, और if the asset is held for sale as per 105, this we will see in 105. Okay, important point, when the asset is held idle or retired from active use, depreciation is not stopped. Only when the asset is scrapped or sold, आप इसको पूरा स्क्रैप ही कर देते हो, इसकी रेसिडुअल वैल्यू तक आ जाती है, then you stop the depreciation. But if only because the asset is sitting idle doesn't mean that you stop depreciating the asset. Okay, now land and building, land versus building, they are separate assets, we have to account for them separately. Land का usually unlimited life रहता है, there is no depreciation to be taken on land, but buildings usually have limited life. Now an increase in land value does not affect the building depreciation. अगर land cost में site restoration cost भी included है, so that portion will be depreciated along with the benefit period. Okay, but never depreciate land. Now there are depreciation methods suggested by IndAS 16, which are like, first is straight line method. You have to constantly charge um, the value of the asset over its useful life. Second, you have diminishing balance method based on the diminishing balance. You have units of production method. आप जितना output expect कर रहे हो उतना आप depreciate charge करते जाओगे. Now depreciation method based on revenue is strictly prohibited as per IndAS 16. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको जितना रेवेन्यू हो रहा है आप उतना डिप्रिशिएट करोगे एसेट को बेस्ड ऑन योर एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू, बिकॉज रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. रेवेन्यू कैन ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन, राइट? तो यू कैन नॉट depreciate an asset based on revenue. This is strictly prohibited as per IndAS 16. Okay. Now, any changes in residual value, useful life, or depreciation method uh, are accounted for as a change in accounting estimate. These have to be reviewed at least at each financial year end. Every year you have to review an asset's residual value, useful life, and depreciation method. अगर कोई भी change है तो you will have to
account for them as changing accounting estimate in days as per IndAS 8. What does that mean? You have to account for them prospectively as we saw in the example. हमने first year का depreciation जो 1 lakh था, we did not change that. We only started increasing the depreciation from the second year onwards. Okay. Now let's see derecognition. When to derecognize a PPE? Has the asset been disposed of? आपने क्या asset dispose of कर दिया है तो you can derecognize the PPE. और the FEB जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एसेट से, आर देयर एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स? अगर नहीं है तो डी रिकॉग्नाइज द पीपी बिकॉज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया विल नॉट गेट फुलफिल्ड. इफ there are still future economic benefits from the asset, then you have to continue to recognize it. Okay. अगर कोई गेन और लॉस है डी रिकॉग्निशन का तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट इन पी एंड एल अदर इनकम. You cannot classify the gains as revenue. Okay. Now, changes in existing decommissioning, restoration and similar liabilities. Okay. So we saw in our recognition that you have to include the initial estimate of dismantling an asset, right? Let's just see an example of that. So हमने पेट्रोल पंप का एग्जांपल लिया था जहां पे हमने बोला था कि सेटअप कॉस्ट इज 50 lakhs and you have a legal obligation after 10 years to remove all the tanks and restore land. तो आपने जो भी वहां पे टैंक्स बनाए हैं, you have to remove all those tanks and you have to restore the land after 10 years. ठीक है. You are estimating that the future cost will be 10 lakhs after 10 years. तो आपको क्या करना है, इस 10 lakhs को present value करना है based on the discounting rate. So let's say the discounting rate is 10%, assuming present value of your 10 lakhs for 10 years will be 3.86 lakhs. तो आप डे जीरो पे क्या करोगे, you will do 50 lakhs plus 3.86 lakhs, which is 53.86 lakhs will be the cost of the asset which you will be recognizing. What entry you will be passing? You will be passing PPE to cash, आपने 50 दिया है, to provision for decommissioning liability 3.86. अब ये decommissioning liability every year you will have, every year this decommissioning liability will be increasing. उसे हम कहते हैं unwinding of interest, right? तो on this 3.86 you'll have to charge interest cost every year which will go to your P&L. आपका इंटरेस्ट कॉस्ट P&L में जाएगा, एंट्री होगी इंटरेस्ट कॉस्ट टू प्रोविजन and your provision will keep increasing until 10 years until you have the provision of 10. Okay, so you have to keep unwinding the interest for 10 years until you are getting the decommissioning cost of 10, which will be the provision for decommissioning liability. Okay. Now what if there is a change in this liability? अभी हमने देखा कि हमने ये estimate किया है, but now then we say that in the future years there is a change in this liability. So अगर हम change कर रहे हैं liability में, changes in decommissioning, if we are recording the asset at cost model, if there is an increase in liability तो हम क्या करेंगे, हम उसको cost में add कर देंगे. We will take PPE to provision for decommissioning liability. अगर कोई डिक्रीज इन लायबिलिटी है तो हम उसको पीपीई के थ्रू ही रिड्यूस करेंगे. बट इफ वी आर यूजिंग रीवैल्यूएशन मॉडल देन वी विल हैव आइदर रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन गेन और रीवैल्यूएशन लॉस. तो हम उससे हमारी प्रोविजन फॉर डिकमिशनिंग लायबिलिटी को एडजस्ट करेंगे. सो सपोज इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन लायबिलिटी तो हम वी विल टेक इट एज अ रीवैल्यूएशन लॉस, राइट, क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है. सो विल हैव अ रीवैल्यूएशन लॉस टू प्रोविजन. एंड अगर कोई डिक्रीज है लायबिलिटी में तो विल हैव प्रोविजन टू revaluation gain. So revaluation gain will go to OCI and revaluation loss will go to P&L. इसके लिए भी हमने एक एग्जांपल लिया था ऑयल कंपनी का, where you have asset cost of 10 lakhs, you have present value of initial decommissioning liability of 1 lakhs. तो आपका total carrying amount हो गया 11 lakhs. अब we say that there is an increase in liability from 1 lakh to 1.5 lakh. The present value of the decommissioning liability has increased to 1.5 lakhs. What you will do, you जो भी 0.5 lakhs extra है you will add to the cost of the asset 11.5 lakhs. अगर कोई decrease in liability है तो you will have to
सिमिलरली रिड्यूस. सो अगर हम बोलते हैं कि हमारी लाइबिलिटी 20,000 हो गई है, सो देन in that case we'll have to reduce the 80,000 from the carrying value of the asset. Okay, this was for the cost model. Similarly, every year interest expense on 1 lakhs, you'll have to keep unwinding interest expense. You cannot capitalize the interest expense. Okay, so this interest expense will go to P&L. Okay, we saw this unwinding of discount to P&L as it occurs. ठीक है. कमिंग टू हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम एरियाज, ये कुछ कुछ ICAI के फेवरेट क्वेश्चंस हैं विच आर फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एंड ऑल्सो आर पार्ट ऑफ योर RTPs. सो ध्यान देना. First is your decommissioning, restoration, and similar liabilities. We just saw the example of decommissioning liabilities. What you'll have to do, the initial estimate of decommissioning liability is capitalized to the PPE, and you'll have to create a provision for decommissioning liability at present value. Okay, over time, your present value increases due to passage of time. You keep on unwinding the interest, which we call unwinding of discount. We recognize this as finance cost in P&L. We cannot capitalize this. Okay, this is very important. Now the next is the trial run income adjustment. Usually जो हमने वो carve out देखा था, we have to always deduct the net proceeds from the test. अगर if there is any income from the sample units of test production, then we'll have to always deduct that income from the cost of the PPE. We cannot recognize this in P&L. Okay, अगर if there is a change in useful life mid year, अगर mid year कोई useful life change हो जाती है, तो you'll have to calculate the depreciation up to the date of review and you have to calculate the new amount. ठीक है. Any impairment or loss, so usually ICAI tests in day 16 along with impairment of assets. Okay, any deferred credit, in case if the asset is acquired for a deferred credit, if you have to make the payment after 1 or 2 years, then how will you record the asset? You have to record the asset at present value. Okay, so iske baad we have given some quick revision pages, so you can go through this quick revision pages. It's the same thing what we discussed, and we end our in day 16 ka revision here. Thank you.